Good morning, students. We'll continue with chapter 7. So the next topic in chapter 7 is the reflex action. In the first lecture we have talked about the structure of a neuron. Now what is reflex action? Reflex action का मतलब होता है sudden action whenever there is some stimulus from the environment. कोई भी environment से stimulus आता है तो our body give a response to that stimulus. जो हमारी body है वो उस stimulus का response देती है. So if our body show sudden action, sudden response to some stimulus of the environment, this is known as an reflex action. Now थोड़े से एग्जाम्पल अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन के देखें तो वेन एवर वी टच ए पर्टिकुलर हॉट ऑब्जेक्ट या फ्लेम में कभी गलती से हाथ लगता है तो इमीडिएटली वी पुल आवर हैंड, वी से आई पुल्ड माई हैंड फ्रॉम द फ्लेम इन रिफ्लेक्टली. सो जल्दी से हम हाथ हटा लेते हैं बिना सोचे समझे. सिमिलरली अगर हम कहीं जा रहे हैं तो सामने से देखते हैं बस आ जाती है तो वी जस्ट जंप आउट ऑफ द वे. बस के जो रूट है वहाँ से इमीडिएटली हम हट जाते हैं विदाउट थिंकिंग. सो जंपिंग आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्टली विदाउट थिंकिंग, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल. कई बार हम बहुत भूख लगी है एंड इफ़ वी स्मेल ऑफ समथिंग हमारे मुंह में पानी आ जाता है तो दिस इज़ अगेन अ रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट रिफ्लेक्टली. Okay, that means in this reflex action we do something without thinking. That means this reflex action जो है ये response जो है this is not in our control, so it is out of our control. The response of something in which we don't think and that response is not in our control, that is out of our control, that is known as an reflex action. Okay, now when this reflex action occurs, ये reflex action कब होता है? You know, as I told you, our body show certain action, that is response if there is a change in the environment. Suppose environment में एक change हो रहा है which is a dangerous change, that means there is a dangerous situation. Now to give a response to that dangerous situation, two things are possible. One is our body think consciously, हमारी बॉडी जो है पहले सोचे, या फिर बॉडी जो है वो unconsciously response दे. So whenever there is a dangerous situation, our body does not think, because for thinking, if we respond to some stimulus by thinking, in that case our brain is involved. So why? Because in the brain the thinking centers are there. थिंकिंग के जो सेंटर हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो अगर हम आवर बॉडी स्टार्ट्स थिंकिंग देन आवर ब्रेन इज इन्वॉल्व, बट दैट थिंकिंग सेंटर्स इन द ब्रेन दैट इज़ ए स्लो प्रोसेस. वो इतनी स्लो है कि जब तक हम रिस्पॉन्स देंगे तब तक हमारा हाथ जल जाएगा या हम जो हैं हमारी बॉडी जो है इट विल बी इन अ डेंजरस सिचुएशन. सो वेन एवर देयर इज़ ए डेंजरस सिचुएशन, द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ to give the response to that dangerous stimulus unconsciously. So in reflex action, our body give the response unconsciously. In this unconscious responses, brain is not involved. It is the spinal cord which is involved, right? Remember, this spinal cord as well as brain, these are the two parts of central nervous system. इस चैप्टर में आगे central nervous system भी आएगा. So brain is again a part of central nervous system and the spinal cord is also a part of central nervous system. In reflex action, in most of the reflex action, the spinal cord is involved because the responses of spinal cord, they are fast responses, and in dangerous situation हमारी जो body का response है वो बहुत fast होना चाहिए. Clear? Now what happened? As I told you, थिंकिंग कॉम्प्लेक्स जो है बॉडी का, जो थिंकिंग कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड द ब्रेन इज़ इन्वॉल्व इन दिस. So how it is actually complicated? Many nerve impulses
and many neurons are involved if the thinking process occurs through the brain. ब्रेन में जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों है कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि देर इज़ इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस. हमारा ब्रेन जो है, पूरी बॉडी के नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन में जाते हैं, एंड मैनी न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन दैट. ओके, सो दैट मीन्स देर इज़ अ थिंकिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्रंट एंड ऑफ द स्कल. जो हमारी स्कल है उसके ऊपर के पार्ट में ब्रेन इज़ देयर, एंड आगे का जो पार्ट है स्कल का उसमें थिंकिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. और वो जो थिंकिंग टिश्यूज़ ब्रेन के हैं, दे आर देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल्स. सो द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर in this thinking tissue, and when these neurons or the network of neurons, they receive the signals, signal matlab they receive the information from all parts of the body in a form of nerve impulse. So the brain receives the signals from all the parts of the body, and after receiving these signals our body respond. ब्रेन जो है वो ऑर्डर देता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए. सो एक्चुअली हाउ इट अकर्स, इफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व, देयर इज अ स्टिमुलस. नाउ दिस स्टिमुलस goes into the thinking part of the skull. In the thinking parts of the skull, many nerves are coming from all the parts of the body. Because the many nerves comes from all the parts of the body, and then the brain show the response. किस तरह का रिस्पॉन्स? वो रिस्पॉन्स या तो मसल्स में जाता है कि मसल्स शुड गेट कंट्रैक्टेड, और इट गोज़ टू द ग्लैंड्स सो दैट ग्लैंड शुड सीक्रेट सर्टन थिंग्स. ओके, नाउ द नर्व्स जो हैं, व्हाट कैरीज द signal towards the brain and back from the brain, these are the nerves. So what is the function of the nerves? The function of the nerve is to carry the signal from the body towards the brain and from the brain back to the various parts. Okay, now example, if we touch an object and if it takes more time, कब मोर ज़्यादा टाइम लेगा? when the brain is involved, when these processes takes place, then by the time the brain send the signal back to the body, then जो हमारे हाथ है वो ऑलरेडी जल जाएगा. So to prevent these, to solve this problem, there are unconscious responses. Unconscious responses मतलब जिसमें कि थिंकिंग नहीं है. दैट मीन्स ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द अनकॉन्शियस रिस्पॉन्सेस. ये कैसे होते हैं? द नर्व्स आर देयर इन आवर बॉडी विच डिटेक्ट द हीट. सपोज हम एक गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारे जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद द नर्व्स. ओके, सो द नर्व्स जो हैं दे डिटेक्ट द हीट, एंड these nerves, they are connected with the muscles. That means the nerves which detect the heat and the nerves which have to move the muscle ताकि हम अपनी उंगली हटा दें, they should be connected. Suppose we say these two nerves are connected where the brain is not involved, then the response will be very fast. That means nerves, they detect the signal which is known as an input, and the response जो है that is known as an output. These nerves which are responsible for the input and the nerves which are responsible for the output, if there is a connection, if there is a direct connection of these two nerves which receives the stimulus and which send the response to the parts of the body, if there is a direct contact, then that is known as an unconscious response which is very fast. Okay, now such a response where the action is completed very quickly, that is in a form of an arc. तुमने देखा होगा एक सर्कल है बट सर्कल नहीं बनता. सो इन द रिफ्लेक्स एक्शन I will show you, or I'll explain you with the help of a diagram. Next slide will be the diagram. It doesn't form a circle, it forms an arc. That means circle is not completed. So reflex action takes place and it is called as a reflex arc. Now the question arises, where the input nerves and the output nerves meet.
जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में तुम्हें बताया है, अगर इनपुट नर्व्स और आउटपुट नर्व्स आपस में मिल जाती हैं तो रिस्पॉन्स विल बी वेरी क्विक. सो इट इज़ द बेस्ट प्लेस where this input and the output nerves meet is the spinal cord, because in the spinal cord जितनी भी nerves body में से आती हैं they go to the brain through the spinal cord. That means in the spinal cord nerves from all over the body meet in the spinal cord, and after this spinal cord the information goes to the brain. That means in reflex action the decision about the response is taken by the spinal cord, but once the action gets over, जब action complete हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में भेजती है कि दिस एक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, बिकॉज आवर ब्रेन मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर अकरिंग इन आवर बॉडी. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ब्रेन को ना पता हो. तो ये वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, ये वाला जो एक्शन हमारी बॉडी ने दिखाया है, द स्पाइनल कॉर्ड इज़ इन्वॉल्व, बट आफ्टर द action gets completed the spinal cord send a information to the brain that this thing had happened. Now why the reflex are thinking, why the reflex are, why the reflex action, ये रिपीट कर रही हूँ मैं, तुम्हें मैंने बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर क्यों होता है. व्हेन द थिंकिंग प्रोसेस, बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट वेरी फास्ट एंड देयर आर सर्टन stimulus in which the reaction or the response has to be very fast. Just to tell you how the reflex action takes place, the mechanism is, the reflex action जो है it involves coordination between the receptors. Receptors मतलब स्किन में जब हम हाथ लगाते हैं गर्म चीज़ को तो हमारे स्किन में receptors present होते हैं. So receptor organ है, right? This receptor organ, the nerve impulse जो है, whenever we touch something, these are known as the receptors, and the heat, when the receptors they feel the heat, the nerve impulse is created. Nerve impulse is created. Now this nerve impulse which is created, that goes to the spinal cord with the help of sensory nerve fibers. So what are sensory nerve fibers? ये जो है, can you see this, ये वाला जो sense ये है, the arrow is going towards the upside, towards the spinal cord. This is a spinal cord. ये जो है वो spinal cord है, right? So when we touch an object, the receptors जो हैं they receive the stimulus and a nerve impulse is created. That nerve impulse goes to the spinal cord through the sensory neurons. Now what are sensory neurons, or what are the sensory nerve fibers? Any nerve impulse which goes from the body towards the central nervous system, towards the brain or towards the spinal cord, that is known as sensory neuron. Sensory neurons take the sensory impulses from the any part of the body towards the central nervous system. So ये sensory neuron जो हैं, they are taking the nerve impulse to the spinal cord. This is a spinal cord. Now यहाँ spinal cord में से this is one sensory neuron, and the second thing is a motor neuron. Second thing is motor neuron. This is a motor neuron, this is a sensory neuron. Now this sensory neuron and the motor neuron in the spinal cord, ये क्या है? Spinal cord है. Spinal cord के अंदर sensory neurons, that is an input neurons, and the motor neuron, that is an output neuron, they are connected with each other with a neuron which is known as a relay neuron. जैसे हम relay race करते हैं तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ एक जो है दूसरे को कोई चीज़ देता है ताकि वो भागे. सो दिस सेंसरी न्यूरॉन पास द इंफॉर्मेशन, पास द नर्व इम्पल्स टू द सेकेंड मोटर न्यूरॉन. So the connection between the sensory neuron and the motor neuron, that is known as a relay neuron. So this motor neuron then takes the response from the central nervous system, that is from the spinal cord, with the help of a motor neuron. Motor neurons are the neurons which take the response from the central nervous system towards the body. Okay, so these motor neurons, they take the impulse from the central nervous system, that is from the spinal cord, because spinal cord is a part of central nervous system.
दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है? ब्रेन. ब्रेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो व्हेन इट टेक द motor neuron take the response to the muscles. Now muscles जो हैं they are known as the effector organ because muscles have to respond based upon the impulse which is carried by the motor neurons. Motor neurons जो है वो impulse जो है that goes to the effector organ. यहाँ पे effector organ क्या है? muscle है. So muscles जो है it gets contracted. सो जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन द नर्व इम्पल्स गोज़ टू द स्पाइनल कॉर्ड. फ्रॉम द sensory neuron it goes to the motor neuron through the relay neuron, and through the motor neuron that response is sent to the muscles. So muscles immediately contract and we withdraw our hand. यहाँ पे brain is not involved. The thinking centers of the brain, they are not involved. So there is a receptor organ, like इस case में there is a skin, okay, which initiate the sensory nerve impulse, because कोई भी stimulus जो है वो central nervous system में जाता है in a form of nerve impulse. I told you last time what is a nerve impulse. Then sensory neurons. So sensory nerve impulse goes towards the brain or the spinal cord with the help of a sensory nerve fibers. Then it goes to the spinal cord. Spinal cord से it goes to the motor neurons, or it is converted into the motor impulse. It is converted into motor impulse, and this motor impulse through the motor nerve fiber, this motor impulse through the motor nerve fibers that goes to the effector organ, and in this case effector organ is a muscle. So muscle gets contracted, or if this motor effector organ is gland, then gland starts secreting some secretion. So this is in a form of an arc. See, circle पूरा नहीं बनता, यहाँ से शुरू होता है reflex section, इधर से यहाँ जाता है, ऊपर स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर नीचे आता है, देन मोटर इम्पल्स बनता है, देन मोटर न्यूरॉन से वो जो है वो मसल में या ग्लैंड में जाता है. सो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एन आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एन आर्क, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्क. दिस इज़ नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्क. ओके, now the effector organ, as I told you, effector organ that is a muscle or the gland. Okay, अब अगर हम देखें कि कौन सा path है, if it has been asked in the examination, just show the path of the nerve impulse which occur during the reflex action. So the various components which are involved in the reflex arc में कौन कौन से component involved हैं? First is the stimulus. That means stimulus मतलब hot thing. अगर हम किसी को गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो that is known as a stimulus. So stimulus जो है वो what detects the stimulus? The receptor organ. Like I told you, the skin is a receptor organ. ये receptor organs जो हैं, then the stimulus is carried to the central nervous system with the help of sensory neurons. Sensory neurons take the stimulus from the receptor towards the spinal cord. Then the sensory neuron take the impulse to the spinal cord. Spinal cord जो है it sends the impulses through the motor neuron to the effector organ. Effector organ कौन से होंगे? या तो muscle या gland, and we show the response. So these are the various components which are involved in the reflex arc. Now अगर कोई पूछे कि शॉर्ट आंसर्स में पूछे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन के दो मेजर एडवांटेज हैं. एक एडवांटेज ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट एनेबल आवर बॉडी टू थिंक वेरी क्विकली. इट गिव्स वेरी क्विक रिस्पॉन्स. ये क्विक रिस्पॉन्स कब देता है? व्हेन द स्टिमुलस इज़ हार्मफुल. जैसे किसी गर्म चीज़ को हम हाथ लगाते हैं तो स्टिमुलस इज़ वेरी हार्मफुल. इट मे बर्न आवर फिंगर. सो द रिफ्लेक्स एक्शन इज़ वेरी क्विक रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल सिचुएशन. अगर ये क्विक रिस्पॉन्स नहीं होगा तो इट मे डैमेज आवर बॉडी. It may damage our body. Why? Because these are very quick, because thinking is a complex activity. As I told you,
thinking receptors are present into the brain, and it is a complex activity in which many complicated interaction, many neurons and many nerve impulses, they are involved, and the thinking is a bit delayed response. That means अगर ये brain is involved, then the response will be delayed. जब तक response brain से आएगा हमारी body में पूरा damage हो चुका होगा. So one significance of reflex action is because the responses of the reflex action, they are quick responses, they protect our body from the harmful stimulus. Second advantage is कि brain की अगर overloading है, अगर वो थिंकिंग प्रोसेस में सिर्फ ब्रेन ही इन्वॉल्व है, दैट मीन्स रिस्पॉन्स देने में खाली ब्रेन ही इन्वॉल्व है, तो ब्रेन मे गेट ओवरलोडेड. जस्ट टू प्रिवेंट द फिटिकनेस ऑफ द ब्रेन, फिटिक मतलब थक ना जाए, ब्रेन थक ना जाए, इसी के लिए थोड़े से रिस्पॉन्सेज जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को दे देते हैं. Okay, so it prevents the overloading of the brain. But remember, the spinal cord is also a part of central nervous system, and the brain is also a part of central nervous system. Main part of the central nervous system is brain, but anything which goes to the brain, any nerve impulse, if it goes to the brain, it has to pass through the spinal cord. Spinal cord में ही जाती हैं, और इस रिफ्लेक्स सेक्शन में द टू नर्व्स विच आर इन्वॉल्व, दैट इज ए सेंसरी नर्व एंड द मोटर नर्व, देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन, एंड बीच में स्पाइनल कॉर्ड है. सो दैट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज ए मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर मतलब इट कनेक्ट्स द sensory neurons and the motor neurons. Sensory neurons मतलब which bring the impulse, motor neurons which means which take the response. Okay, now अगर तुम्हें एक डेफिनेशन पूछें कि रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये इट इज़ जस्ट द ओवरऑल थिंग अबाउट दिस रिफ्लेक्स एक्शन. दीज आर स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब इमीडिएट. रिफ्लेक्स एक्शन आर स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक responses, mechanical responses in which our will is not involved, हमारी thinking is not involved, हम उसके लिए willing हैं या नहीं हैं वो involved नहीं है. So it is a mechanical, automatic mechanical response in which our will is not involved, so they are involuntary actions. They are involuntary actions. Involuntary action का मतलब है जो thinking जिसमें involved नहीं होती है. So this reflex action occurs without thinking. So this is a correct definition of a reflex action. They are spontaneous, automatic, mechanical responses जिसमें our will is not involved, so they are involuntary actions. Certain other example, ये first slide में भी I have showed you some of the examples of reflex action. Some other examples of reflex actions are closing of the eye when flashed with a shiny light. अगर immediately कोई light हमारे आँख में पड़ती है तो हम अपनी आँख को close कर लेते हैं. So it is a reflex action. हम ये सोचते नहीं हैं कि आँखों को खोलें कि आँखों को बंद करें. Okay, अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी आइज़ जो हैं वो बंद हो जाती हैं. सिमिलरली कफिंग, हम कफ को कंट्रोल नहीं कर सकते. स्नीजिंग, इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते. दीज आर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. यॉर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, गट peristalsis. Now what are gut peristalsis? We have already talked about. What is gut? Alimentary canal is known as a gut. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें एलिमेंट्री कैनाल इज़ इन्वॉल्व, और खाना जो है वो माउथ से अंदर स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ सर्टन मूवमेंट्स विच अकर ऑन द wall of the muscular wall of the intestine. These movements are known as the peristaltic movements or the peristalsis. So this peristalsis, coughing, sneezing, yawning, blinking of the eyelids, these are certain other example of reflex action. Okay students, I think we'll finish up here, and next time I'll take the next topic. Thank you.